So let's start on my session. My session is about how to do counseling for career and college admission. So there are two parts to the session. The first one is about how to do career counseling. And the second part is about how to do college admission counseling. Okay. So the first part is what I'm starting with. Across the world, across 3 different approaches to career counseling. The first one is a personality-oriented approach. Personality-oriented approach looks at the traits of people and therefore their behavior. इसमें क्या होता है कि किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी करते हैं with the personality of the people within a team. तो हम किसी नए इंसान को अगर अपनी टीम में ज्वाइन करा रहे हैं या अपनी कंपनी में ज्वाइन करा रहे हैं तो ये देखते हैं क्या वो हमारी टीम में या हमारी पर्सनालिटी में फिट होगा कि नहीं होगा. दैट इज अ पर्सनालिटी ओरिएंटेड अप्रोच. तो इस अप्रोच को हम यूज कर सकते हैं ये फिट देखने में कि हमारी कंपनी के कल्चर में फिट होता है कि नहीं, पर जॉब के स्पेसिफिकेशन से फिट होता है वो ये अप्रोच नहीं बताती हमको. तो इसमें कॉमन असेसमेंट्स हैं MBTI, मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर, या बिग 5 पर्सनालिटी टेस्ट, और भी हैं जैसे 16 PF टेस्ट है, या फिर आपका डिस्क प्रोफाइलिंग है. तो ऐसे काफी सारे पर्सनालिटी ओरिएंटेड टेस्ट हैं जिनको यूज किया जाता है पर्सनालिटी ओरिएंटेड अप्रोच में. दूसरा है एप्टीट्यूड टेस्ट. तो एप्टीट्यूड टेस्ट में एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रॉब्लम को देख के कर सकते हैं कि क्या ये इंसान इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है या नहीं. तो जैसे आर्किटेक्चर है, कोई बच्चा आर्किटेक्ट बनना चाहता है, आप उसको स्पेशल रीजनिंग का टेस्ट दे दीजिए और ये जज कर सकते हैं कि इसकी थिंकिंग में स्पेशल रीजनिंग है कि नहीं है. वो 3 डायमेंशन में सोच सकता है, विजुलाइज कर सकता है. इस तरह का टेस्ट होता है एप्टीट्यूड टेस्ट. आर्किटेक्चर का हुआ, या क्वांटिटेटिव एबिलिटी, नंबर्स के साथ इसका रीजनिंग का इसके पास दिमाग है कि नहीं है. इस तरह के एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं विच आर स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल. करियर में एक इंसान के बड़े सारे जॉब्स होते हैं. वो शुरू हो सकता है क्लर्क की तरह शुरू कराए, फिर मैनेजर बन गया, फिर सीनियर मैनेजर बन गया. तो क्लर्क का टेस्ट तो है पर मैनेजर का टेस्ट तो नहीं होता. इस तरह से ये लिमिटेड है अपने अप्रोच में. स्पेसिफिक ओनली टू अ पर्टिकुलर जॉब इज व्हाट एन एप्टीट्यूड टेस्ट डज. फिर आता है तीसरा अप्रोच जो कि इंटरेस्ट का. अगर इंसान में किसी चीज को करने का इंटरेस्ट है, दैट इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ हिज करियर चॉइसेस. तो ज्यादातर जो वर्ल्ड के अंदर अप्रोच ली जाती है वो इंटरेस्ट ओरिएंटेड अप्रोच होती है. ये हमको दर्शाती है, बताती है कि किसी भी इंसान के अंदर जो जॉब है, जो करियर है, उसका बेस्ट फिट क्या हो सकता है. और इसीलिए ये पूरे वर्ल्ड में जितने भी डिपार्टमेंट ऑफ लेबर है, अमेरिका का है, यूके का है, न्यूजीलैंड का है, ऑस्ट्रेलिया का है, हम लोगों ने जो हमारी कंपनी में अप्रोच ली है करियर ओरिएंटेड अप्रोच ली है. और इसके जो लीडर समझिए, थॉट लीडर, या जिन्होंने इसको पॉपुलराइज किया है, जो जिनका ये वर्ल्ड स्टैंडर्ड है, वो है मिस्टर डॉक्टर जॉन हॉलैंड, जिनकी थियरी ऑफ करियर्स है. ये थियरी ऑफ करियर्स क्या है? उन्होंने 6 वोकेशनल पर्सनालिटीज आइडेंटिफाई करी हैं, जो है रियलिस्टिक, इन्वेस्टिगेटिव, आर्टिस्टिक, सोशल, एंटरप्राइजिंग और कन्वेंशनल. ऐसे ही उन्होंने 6 मॉडल वर्किंग एनवायरनमेंट आइडेंटिफाई किए: रियलिस्टिक, इन्वेस्टिगेटिव, आर्टिस्टिक, सोशल, एंटरप्राइजिंग और कन्वेंशनल. और उन्होंने ये पॉस्टुलेट किया कि हर इंसान इन 6 पर्सनालिटीज में से एक होता है. एक तरह की पर्सनालिटी होती है उसकी डोमिनेंट, और हर इंसान उसी तरह का एनवायरनमेंट ढूंढता है जो उसकी पर्सनालिटी से मैच करता है. और पर्सनालिटी और एनवायरनमेंट का मिश्रण जो होता है, जो इंटरेक्शन होता है, उससे उसका करियर बनता है.
तो ये एक तरह का वर्ल्ड स्टैंडर्ड है जिसको सब जगह यूज किया जाता है करियर प्लानिंग के लिए। अब let's take a look at all the personalities one by one. तो पर्सनालिटी टाइप रियलिस्टिक किस तरह की होती है? They are eager to learn and are intellectually curious. वो काम उस तरह का पसंद करते हैं जिसमें टूल्स इन्वॉल्व हो, मशीन्स इन्वॉल्व हो, प्लांट्स हो और एनिमल्स हो। They are practical, action oriented and like physical activity. उनको हाथ से काम करना हो उस तरह का काम उनको ज्यादा पसंद आता है। Just persistent, self-reliant, handy and practical. They like practical work instead of theory, research-oriented kind of jobs. And they're very practical. They value practical things and are based in reality. तो अगर मैं इनका चित्रण करूं, आपको एक इनका स्केच दूं या एक इमेज दूं, तो जैसे मैकेनिकल इंजीनियर या ऑटोमोटिव इंजीनियर होते हैं, वो जाके टूल्स के साथ यूज करके अपने हाथों को यूज करके आपकी गाड़ी ठीक कर देते हैं। तो उनका आप इमेजिन करने की कोशिश करिए, तो उस तरह का इंसान इज अ रियलिस्टिक काइंड ऑफ अ पर्सन। इनके लिए बहुत सारे हैं, इंजीनियरिंग में सिविल, मैकेनिकल, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिकल, ऑल द इंजीनियर्स दैट लाइक टू वर्क विद द हैंड्स। आर्ट, आर्किटेक्चर एंड डिजाइन में आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिजाइनर्स, पैकेजिंग डिजाइनर्स, ऑटोमोटिव डिजाइनर्स, कम्युनिटी और सोशल सर्विस में, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री में, ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म में, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स में। तो अक्रॉस अ लॉट ऑफ फील्ड्स इनके लिए करियर बहुत है। We move on to investigative careers. Investigative careers में जो लोग होते हैं, वो होते हैं, they value logic and order and are very analytical and intellectual. They like to think things through until a solution is found. They like using investigative qualities to explore their innovative ideas. They prefer loosely structured environments without too strict rules. This is an important part. They are eager to learn and intellectually curious, and they value critical thinking and use it to answer unknown questions. अगर इनका मैं आपके लिए इमेज देना चाहूं किस तरह के इंसान होते हैं, तो think of Albert Einstein. Research oriented, investigation oriented, want to get deep into a topic और अंदर तक जाके उसको समझना, खोजबीन करना, उस तरह के लोग होते हैं। They also find careers in engineering, but those careers that are not inviting them to use their hands, but think things through and go deeper into a subject area. So biochemical engineering, biomedical engineering, electronics, chemical engineering, robotics, these are the areas in which they will prosper. Financial services में financial analysts, stockbrokers, loan and credit services. Information technology is one area where they'll prosper. Software engineering, research scientists, software quality assurance, healthcare, almost all kinds of frontier areas in medicine, allied healthcare, counseling and therapy. Community and social service areas में, certainly in the areas of life sciences, physical sciences, social sciences, earth and space sciences, management. So wide spectrum of areas where investigative people can make careers. Let's look at personality type, artistic. Artistic people are original, imaginative, intuitive, passionate, and very romantic. Very interested in work that involves creativity, value beauty and freedom, and are impulsive and sensitive, explore their curiosity in very expressive ways, think creatively and idealistically to solve problems irrespective of field of work. The obvious stereotype is that people who are in the artistic field, a painter, for example. But इसमें जो है दो पहलू हैं आर्टिस्टिक के। एक तो वो है जो कि आपका चित्रकारी कर सकते हैं या फोटोग्राफी कर सकते हैं या आपका म्यूजिक बना सकते हैं। एक और है
who are artistic or innovative in their mind. So, जरूरी नहीं है कि artistic person is only a painter or musician or whatever. Artistic person can also be a person like Steve Jobs, who used to be innovative in his mind and applied artistic or innovative thinking, creative thinking to computers, design of computers, iPad, iPhone, kind of things. So an artistic person can have two kinds of qualities. One is artistic in his thinking and doing painting, music, dance, drama, or artistic in terms of innovativity and creativity applied to other kinds of areas. So an artistic person could be involved in arts, architecture, and design. So designers in commercial art and pure arts, in photography, sculpture, model making, makeup artist, fashion styling, could be in literary arts, writing, performing arts, those kind of areas. Plastic arts like sculpture, metalworking, paper art, and things like that. Could be in media and communication. So a wide range of careers are possible for artistic people. We unfortunately think that they can only be musicians or painters, but there's a huge spectrum of areas where artistic people can make careers. Then we have the social people. Social people have a warm and friendly personality and are willing to learn. Are dedicated leaders, humanistic, responsible, and supportive. They solve problems by feeling rather than physical activity. They enjoy informing, helping, training, developing, and curing people. Have a strong interest in understanding of human nature and serving humanity. The obvious stereotype of a social person is a nurse who's caring, who likes to reach out to people and serve humanity, or a social worker. But beyond these two are also other people who like to serve people. For example, the person who's working in a hotel manager. So the social people can be people who are in social service, who like to serve people in healthcare and things like that, or could be teachers and hotel managers also, who are serving people in a different way, are of service to people in a different way. So we have social personalities when it comes to work. So they can be in the area of education, training, and library services, community and social service, agriculture, animal husbandry and forestry, financial services, travel, hospitality, food preparation and services, travel, hospitality, food preparation and allied services, transportation and logistics, particularly flight attendants, legal, civil and defense services, judges, lawyers, public administration, Indian civil services, healthcare, management, media and communication. Then we come to the personality type, enterprise. They're very ambitious, enjoy money, power, and status, have the ability to convince other people of their ideas, like working with power and influence. To what effect? To persuade, lead, or manage people for organization goals or economic gain. They have a strong interest in working with people and ideas, have the innate willingness to take initiatives and motivate and lead. इसका typical example अगर मैं लूं, तो those are people who are entrepreneurs. अपना पैसा लगाया, काम शुरू किया, और लोगों को कन्विंस किया, अपने साथ लेके आए, एक अपना बिजनेस शुरू किया, रिस्क लिया, लीडरशिप दिखाई, आगे बढ़े. So those are the kind of people who are examples of enterprising vocational personality. Typical areas where they find jobs: financial services, community and social service, information technology, education and training, agriculture, animal husbandry and forestry, legal, civil and defense services,
particularly defense services, where you have to take risks, demonstrate leadership, lead people. Management, the entire spectrum of management is full of people who have an enterprising personality, and transportation and logistics. Finally, come to the conventional people. They're quiet, careful, responsible, well organized, and task-oriented. The focus is on task orientation. Are usually very professional in the workplace at all times, like working indoor at tasks that involve organizing and being accurate, following procedures, working with data or numbers, are detail-oriented and make excellent workers, known for their perseverance in taking up tedious tasks. उनको कोई भी काम दे दीजिए which is organized, task-oriented, the steps are well laid out, वो उस काम को ढंग से करेंगे और एक मेथड और प्रोसेस को अप्लाई करते हुए करेंगे. A typical example of this kind of personality type is the accountant who works in the office. Career options: art, architecture and design में जो लोग एंटीक्स, आर्ट ऑब्जेक्ट्स को अप्रेज करते हैं, उनकी बोली लगवाने में कितना उसका होना चाहिए उसकी जजमेंट करते हैं, वो लोग. कॉस्ट्यूम डिजाइनर, हैंडीक्राफ्ट प्रमोशन, इस तरह के काम करते हैं. फाइनेंशियल सर्विस में सीएस जो होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट अकाउंटेंट्स, जो अकाउंटेंसी के प्रोफेशन में होते हैं. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्वालिटी एश्योरेंस जो करते हैं या सिक्योरिटी देखते हैं कंप्यूटर सिस्टम्स की. लीगल, सिविल एंड डिफेंस सर्विसेज में जो लोग होते हैं. मैनेजमेंट में जो क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस में होते हैं लोग. ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स में जो लोग काम करते हैं, ये सब आपके कन्वेंशनल पर्सनालिटी टाइप्स होते हैं when it comes to vocations. Now we come to the career counseling process. There are 6 steps to the career counseling process. The first of which is to build rapport. What is rapport? Rapport is something that gets you on the same page as the other person. Now, in counseling, rapport is really important so that the person you're doing counseling to starts trusting you. Only when the trust is established will the other person confide in you and share information with you, which is true. अगर वो ट्रस्ट नहीं करेगा तो आपको अपने दिल की बात नहीं बताएगा, और जब तक वो नहीं बताएगा तब तक आप जो भी काउंसलिंग उसको करोगे उसका कोई फायदा नहीं है. To build the rapport, first thing you have to do is to make the person as comfortable as possible. Ask open-ended questions. Questions दो तरह के हो सकते हैं, open-ended या closed-ended. Open-ended questions होते हैं what से शुरू होते हैं, या how, या when, इस तरह क्वेश्चंस होते हैं. जो closed-ended questions होते हैं वो होते हैं why did you do this, why did you do. Open-ended questions होते हैं आपने ये किया तो क्यों किया, किस लिए किया. तो उससे आदमी जो है थोड़ा घबरा जाता है उस तरह क्वेश्चन से. ओपन-एंडेड होंगे तो अपनी बात कह पाता है. डू लेस इंटरप्रिटेशन. जो आगे वाले ने बात कही उसको आप इंटरप्रेट करने की कोशिश करो. अच्छा, आपका कहने का मतलब ये था क्या, तो वो घबरा जाता है, फिर खुल के बात नहीं कर पाता है. इंक्रीज सेल्फ डिस्क्लोजर प्रोग्रेसिवली. अपने बारे में कम बात करना और दूसरे की बात ज्यादा सुनना. यूज नेम्स. जो आप दूसरे को एड्रेस करें तो उसके नाम से करें. और डेमोन्स्ट्रेट एम्पैथी. जो वो कह रहा है या कहने की कोशिश कर रहा है उसको आप उसी की भाषा में बात करके आप ये डेमोन्स्ट्रेट करेंगे हाँ मैं आपको समझ रहा हूं या समझ रही हूं, और उससे रैपो बनती है. दूसरी चीज जिससे रैपो बनती है वो आपकी जो आप फिजियोलॉजी जो आप उसको दिखाते हैं, अपनी फिजिकल पोस्चर से जो दिखाते हैं. एक बहुत माने हुए क्या कहना चाहिए साइंटिस्ट है, कम्युनिकेशन की फील्ड में एक्सपर्ट है. उन्होंने एक रूल बनाया कि कम्युनिकेशन जो हम दूसरों से वार्तालाप करते हैं, जो बात करते हैं, उसमें जो हम वर्ड्स यूज करते हैं
उसका इफेक्ट सिर्फ 7% है। जो हम टोनैलिटी यूज करते हैं, जिस तरह से हम बात करते हैं, उसका इफेक्ट सिर्फ 38% होता है। पर जिस फिजियोलॉजी को यूज करें, जिस तरह से हम खड़े होते हैं, जिस तरह से अपने हाथों को यूज करते हैं, जिस तरह से हम सर को हिलाते डुलाते हैं, फिजियोलॉजी को यूज करते हैं, उसका इफेक्ट 55% होता है। तो हम अगर हमारा कम्युनिकेशन में हम जो बोल रहे हैं और जो हम अपने हाथ पांव सिर आंखों से जो जता रहे हैं, अगर वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है, जो एक दो मेल नहीं खा रहा है हमारे शब्दों से और हमारे लहजे से, तो जो भी हम कह रहे हैं वो आगे वाला उसको नहीं मानेगा कि हम सही कह रहे हैं। तो हम अपने पोस्चर को, हम अपने जो फिजियोलॉजी है उसको कैसे मैच कराएं ताकि आगे वाला ये समझे जो हम कह रहे हैं वो सही है। तो पोस्चर एक चीज होती है, हम कैसे बैठे हुए हैं, हम अपनी बॉडी को किस तरह से मेंटेन कर रहे हैं, हम अपने सर को किस तरह से झुका रहे हैं, ये हम दूसरे आदमी के साथ मैच करते हैं या नहीं करते हैं। मैचिंग और मिररिंग दो तरीके होते हैं जिससे हम अपनी फिजियोलॉजी को दूसरे इंसान के साथ मैच के साथ रैपो बिल्डिंग में यूज कर सकते हैं। मैचिंग क्या होती है? अगर दूसरे वाले बंदे ने मान लीजिए अपना दायां हाथ खड़ा किया और हम भी अपना दायां हाथ खड़ा करते हैं, तो वो होता है मैचिंग। मिररिंग ये होता है कि दूसरे ने अगर अपना दायां हाथ खड़ा किया, तो शीशे में अगर हम अपना दायां हाथ खड़े करते हैं तो लगता है कि बायां हाथ खड़ा हुआ है, तो आप बायां हाथ खड़ा कर दीजिए, तो वो होता है मिररिंग। तो मैचिंग और मिररिंग दो टेक्निक्स हैं जिससे हम अपनी फिजियोलॉजी को दूसरे इंसान के साथ रैपो बिल्डिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पोस्चर में जिस तरह से अगर वो इंसान बैठा हुआ है, अगर वह कुर्सी के बिल्कुल आराम से पीछे हट के बैठा है, तो हम भी अगर उस तरह से बैठे तो हमारी रैपो बनने में आसानी हो। अगर वो आगे आगे झुक के बैठा है, हम भी उस तरह से बैठे तो रैपो बिल्डिंग में आसानी होगी। अगर उसका सर एक तरफ झुका के बैठा है और हम भी उस तरह से बैठे तो उसमें रैपो बिल्डिंग में आसानी होगी। अगर वो अपने हाथों को, जेस्चर्स को एक्सपेंसिव कर रहा है, जो हाथ फैला के बातें कर रहा है, हम भी उस तरह से अपने हाथों को फैला के बातें करें तो रैपो बिल्डिंग में आसानी होगी। लुक्स, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस, आई कांटेक्ट, अगर वो आंखें चुरा के बात कर रहा है, हम उसके ऊपर स्टेयर करें तो वो घबराएगा, पर अगर वो आंखें मिला के बात कर रहा है, हम भी आंखें मिला के बात करें तो वो कंफर्टेबल फील करेगा, रैपो बिल्डिंग में आसानी होगी। ब्रीदिंग, अगर हम वो तेजी से सांस ले रहा है, हम हल्की हल्की सांस ले रहे हैं, तो आउट ऑफ कनेक्शन होगा। वॉइस पिच, अगर वो ऊंची टोन में बात कर रहा है, आवाज में नहीं टोन में बात कर रहा है, हम भी अगर थोड़ी सी ऊंची टोन में बात करेंगे तो मैचिंग होगी। वॉइस का टेम्पो, अगर वो जल्दी जल्दी बात कर रहा है या थोड़ा सा गाते गाते बात कर रहा है, यानी कि मेलोडिक तरीके से बात कर रहा है, हम भी ऐसी बात करें तो हमारी मैचिंग होगी। वर्ड्स, वो कीवर्ड यूज कर रहा है या रुक रुक के बात कर रहा है, दो तीन वर्ड बोल के फिर रुक के, फिर दो तीन वर्ड बोल के रुक के कंटेंट चंकिंग कर रहा है, तो हम उस तरह से बात करेंगे तो हमारी रैपो बेहतर होगी। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जिसको अगर हम यूज करें तो रैपो बिल्डिंग में आसानी होती है। फिर रैपो बिल्डिंग में हम उससे अगर वर्बली एंगेज करें और इम्पोर्टेंटली लिसनिंग जो है एक्टिव करें तो रैपो बिल्डिंग में आसानी हो। यानी कि उससे हम बात करें उसकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, उसके सिबलिंग्स और वो क्या कर रहे हैं, उसके घर में लोग, या सब्जेक्ट्स कौन से पढ़ने उसको अच्छे लगते हैं, कौन से क्यों अच्छे लगते हैं, उसके करियर एस्पिरेशंस क्या है, इन सब चीजों के बारे में बात करें तो रैपो बिल्डिंग में आसानी हो। एक बार हम रैपो बना लेंगे तो बाकी चीजों में आगे बढ़ना बहुत आसान होगा और वो ट्रूथफुल आंसर्स मिलेंगे जो काउंसलिंग करने में बहुत मदद करेंगे हमको आगे। Then the second step is to ask about their hobbies and establish
links with vocational personality types. तो hobby मान लीजिए उनकी reading की है. The reading की hobby indicates that the vocational personality that is being used or is being shown is conventional. Writing, music, dance, culture, fine art, photography, they are all indicative of a vocational personality. Then we have craft. Craft में artistic भी होती है, और चूंकि हम हाथों को इस्तेमाल कर रहे हैं तो realistic भी personality का indicative है वो. Debating, model United Nations, ये artistic और enterprising का indicative है. Quizzing, quiz competitions are investigative in nature. Then we have playing video games is realistic in nature. Playing word games, जैसे Scrabble होता है, Boggle होता है, crosswords वगैरह होते हैं, इस तरह के are investigative in nature. Cooking is realistic and artistic in nature. Acting, dramatics are artistic and social in nature. Building models, like students build models of airplanes and things like that, is realistic and artistic in nature. Social and community work are social in nature. Planning, managing events are social and enterprising in nature. Planning and managing of events is social and enterprising in nature. Leadership roles in school, club के आप वो बन जाओ, leader बन जाओ, those kind of things. Keeping pets is realistic in nature. Gardening is realistic in nature. And Olympiads is investigative in nature. Then ask them about the sports they play. So outdoor sports are realistic in nature. Outdoor team sports are realistic and enterprising in nature, because there are people there. You have to kind of take people along with you. That's why it's enterprising in nature also. Chess, Sudoku, checkers, your indoor games are conventional, investigative in nature. Card games are again conventional, investigative in nature. Horse riding, canoeing, yachting, skiing are realistic and enterprising in nature. Trekking, adventure sports are enterprising in nature. Golf is realistic. So is yoga, gymming, and martial arts. Strong and weak subjects, ask them about it. So languages are artistic and conventional. History, physics, chemistry, mathematics, economics, computer science, accounting, geometry, trigonometry are conventional. Biology is realistic and investigative. Fine arts is artistic. Geography, home science are realistic. Psychology, investigative. Business studies, enterprising. Entrepreneurship is also enterprising. Political science, sociology are investigative. Physical education is realistic. Engineering graphics is artistic and conventional. And environmental sciences is realistic and investigative. So once we have a handle on the hobbies, the strong and weak subjects, and the sports the individual plays, we have fairly much an idea of what his personality type is. Then we come to discovering the career options for the student, which is step 5. Reestablish the purpose of the counseling session. Purpose is career choice and educational pathways that we have to discover for the individual. So we first analyze the strengths and weaknesses of the individual in the discussion. Then we explain the theory of careers. Then we identify the vocational personalities. In fact, more often than not, we ask the students, based on whatever you have discussed thus far of the personalities and your hobbies, sports, subjects, what do you think are your dominant personality? And students come up and they normally guess the right one. Then we discuss the vocational personalities in detail, and then based on that, discover their career options.
And finally, we recommend the career directions, education pathways. Education pathways, there are two parts that we discussed. First is what should be the streams and combinations, subject streams and combinations for classes 11 and 12, and courses to consider for graduation. Then we give them study tips as to how they can study. If this is the combination they're taking, then how should they study those subjects? Versus if they're taking another set of combinations, how should they go about studying those subjects? Certain subjects would require memorization extensively. Some would require analytical approach. So how to go about studying different subjects. And then we go and help them out with how to go about building their profile. Which sports to play or focus on, what extracurricular activities to pick up or focus on, and what kind of community service to perform. So that was the career counseling bit that we do and how to go about it. Now we come to college admission counseling. So the first steps is the same as in career counseling, which is build rapport. The next two steps are very critical. This is about creating shortlists. The second step is about identifying courses, creating a shortlist. So we ask the student about the subjects he or she likes to study at school. We want to know what he likes about those subjects. We don't go into why he likes those subjects. What is more important for us is to understand what he likes about those subjects. We also ask him about what are his or her career aspirations and why does he want to go for those careers. We also ask about the awareness of the course and the career options with these subjects he's studying in the present class. If I'm studying sciences, is the student aware of all the courses that he can do with, let's say, physics, chemistry, and maths once he passes class 12? And he's aware of career options that he can do with physics, chemistry, and maths, apart from engineering. Most students know that engineering is something they can do, but apart from engineering, what other course options, career options he has with PCM? So we discuss that, for example. And then we brief them about the additional careers and options of further studies with each subject which he's doing in class 11 and 12. And then we encourage the conversation about careers of interest not covered yet and the courses that need to be studied for them. Basically, the idea is to help him explore what he's not aware of as far as courses are concerned. Then we discuss the course possibilities one by one in terms of what is the content and domain of those courses, the applications of the knowledge that he will gain in those courses, what are the employment opportunities with those courses, what is the type of work, is it indoors, outdoors, does it mean leading people, does it mean working with lots of people or less number of people? And what are the future prospects of those courses? And then we create a short list of those courses together with the student. Then comes the step of shortlisting colleges. So we support the revision and finalization of the course shortlist. Whatever we discussed, that needs to get finalized. Before we come into this step, we ask the student to research colleges and what is important to him or her. So what is most important is first to get a recognition, idea of the recognition and accreditation of the colleges, the location of the college, the cost of attendance. The cost of attendance is not just the fee, but the entire cost of doing that course, which could be, apart from tuition, the cost of, let's say, in the hostel,
the cost of commuting to the college. There could be other hidden costs, cost of library, cost of equipment, cost of this, cost of that. So all the costs that is involved in doing that course at that particular college. Course curriculum, what is the kind of course curriculum that is being used, and is it contemporary? It is in tune with what is going on in the industry. Faculty, what kind of faculty the institute has, what is permanent faculty, what is visiting faculty, what are their qualifications, where have they done their studies from, what kind of research interests do they have, those kind of things. Scholarship opportunities, does the institute offer scholarships to meritorious students? Research orientation, what is the research orientation of the faculty as well as the college itself? Does the college offer research facility? Is undertaking various kinds of research at the institute itself? Industry Connect, does it have programs in association with industry leaders? What kind of programs is there? How good is the teaching facilities in the institute? Do they have good labs? Well-equipped labs? Jobs and internship placements? What kind of peer group is there at the institute? If the peer group, it has people who are not interested in studies, would I want to go in such a college? It's something that you got to think about. And then, of course, campus look, feel, and facilities. And together, we sit down and shortlist the colleges with the student. Then we help the student out in the application form filling. Now, help does not mean we take responsibility of filling up the form for the student. The student has to be aware of when the form is coming out, what details need to be filled out, what certificates need to be attached, what other formalities need to be completed for the application to meet the requirements of the institute. All that is students' responsibility. What we will help out is by doing the due diligence on the form. So we have a checklist, and against the checklist, we'll take marks saying that you're supposed to attach this, have you done this, your mark sheet, this is your mark sheet, has the correct number, help the student planning their profile to meet the admission requirements of demonstrating leadership, extracurricular activities, community service, all of that. So help the student in preparing for the selection process. And then, of course, helping the student in finalizing the admission and joining the college. So guide the student through the admission counseling, which is basically nothing but deciding which course to, selecting the course, finalize the course, and providing tips on making the transition from school to college. What next? So, as far as the student is concerned, assess the career interest, narrow down choices of 2 or 3 career areas, identify higher education alternatives that can lead to most of the chosen career areas, select subjects accordingly in class 11 and 12, shortlist courses of graduation, prepare for entrance examinations, if any, evaluate courses for graduation, evaluate colleges. This is what I would recommend should be the different steps that a counselor should support the student in taking. If you have any questions, I would be most happy to answer.